Assalamu alaikum. Hello. Welcome to another lesson in Theory Made Easy. Please like, share and subscribe and leave a comment below. And we're still covering the chapter Alertness. Don't worry if in the videos it says 1 of 26 and 1 of 13 and 1 of 9. It's because we've covered them questions and we have got this many questions left. So काफी questions cover हो गए हैं. इसीलिए लिखा होता है कि on the questions के 1 of 26 या 1 of 13, so we'll cover them all. जितने कवर हो गए हैं, so ये बता रहा है अब कि 9 क्वेश्चन रह गए हैं अलर्टनेस चैप्टर में. ठीक है ना? तो let's begin. You waiting to turn right at the end of a road. आप वेट कर रहे हैं राइट टर्न करने के लिए रोड के आखिर पे. What should you do if your view is obstructed by parked vehicles? अगर आपका व्यू जो है, मंजर जो है वो obstruct, रुकावट है, आपके रास्ते में रुकावट है, आपको नजर नहीं आ रहा by parked vehicles, साइड पे parked vehicles खड़ी होती है ना, उनकी वजह से आपका अगर व्यू obstruct है, नजर नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? Stop and then move forward slowly and carefully for a clear view. So stop and then move forward slowly and carefully for a clear view. आहिस्ता से पहले रुके, आहिस्ता से आगे जाएं, अगर व्यू क्लियर है तो फिर आगे निकले. Move quickly to where you can see, so you only block traffic from one direction. So आगे जल्दी बढ़ें, जहां तक आप एक साइड से सिर्फ ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं तो फिर आप ठीक है. Wait for a pedestrian to let you know when it's safe for you to emerge. या किसी pedestrian के लिए वेट करें, वो आपको बताए कि आगे गाड़ियां नहीं है तो आप जा सकते हैं. Or turn your vehicle around immediately and find another junction to use. या अपनी गाड़ी जो है उसी वक्त मोड़े दूसरी तरफ और कोई और रोड ढूंढे. So if we're going to explain answer, at junctions your view is often restricted by buildings, trees or parked cars. So junctions पे आपका जो view है ना, वो buildings, दरख्तों की वजह से और पार्क कार की वजह से ब्लॉक होता है, कम होता है. रिस्ट्रिक्टेड, कम होना. You need to be able to see in order to judge a safe gap. So आपको देखना पड़ेगा कि कितनी जगह सेफ है तो फिर आप आगे जा सकती हैं. So edge forward slowly, थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी आगे करें and keep looking all the time. हर तरफ, दोनों तरफ से देखें. Don't cause other road users to change speed or direction as you emerge. आपकी वजह से दूसरे जो रोड यूजर्स हैं ना, उनको अपनी स्पीड कम नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप वेट कर रहे हैं और आपने निकलना है. So if we go back, so the answer is stop and then move forward slowly and carefully for a clear view. Next question. What should you do before slowing down or stopping your vehicle? आपको स्लो डाउन करने से पहले या जब आपने अपनी गाड़ी स्टॉप करनी है तो आपको क्या करना चाहिए? Sound the horn, अपनी horn बजाएं. Use the mirrors इस्तेमाल करें. Select the higher gear. Flash the headlights, या अपनी headlights flash करेंगे. I'm pretty sure everyone would have got this answer. ये सबको आ गया होगा, but let's just go into the explain answer so we can have a better understanding. Before slowing down or stopping, slow down करने से पहले या रुकने से पहले check the mirrors. आपको अपने mirrors check करने हैं to see what's happening behind you, कि आपके पीछे क्या हो रहा है. Also assess what's ahead, और आगे भी देखें कि आगे क्या है. Make sure you give the correct signal. आप make sure करें कि आप correct signal देने लगे हैं. Obviously अगर आपने right पे stop करना है तो right वाला signal देंगे, left पे stop करना है तो left signal देंगे. It will help the road users. दूसरे road users को मदद होगी, उन्हें पता चलेगा कि आपका क्या इरादा है. So the answer is
use the mirrors. Next question. You're turning right onto a dual carriageway. What should you do before emerging? I think we've covered this question before, so I think I'm just going to go right into it and look for the answers. So stop, apply the parking brake and then select a lower gear. रुके तो अपनी hand brake लगाएं and then select a low gear. Position your vehicle well to the left of the side road. अपनी जो गाड़ी है जैसे ये वाली है इसको लेफ्ट वाली साइड पे पोजीशन करें. Check that the central reservation is wide enough for your vehicle. चेक करें कि ये जो सेंट्रल रिजर्वेशन है ये आपकी गाड़ी के लिए आपकी गाड़ी उसमें फिट आ सकती है. Make sure that you leave enough room for a vehicle behind. Make sure करें कि आप पीछे enough room छोड़ते हैं किसी और गाड़ी को आने के लिए. So the answer is check that the central reservation is wide enough for your vehicle. I think we have covered it, but what they do is they'll give you different questions with different similar questions with different wording. So cover किया हुआ है पर वो question का थोड़ी सी wording उसकी different थी मेरे ख्याल में. तो इसलिए उन्होंने ये question फिर दोबारा डाला है. So next question. What does the term blind spot mean? So blind spot जो term है उसका क्या मतलब है? So if we do the literal translation वो होगा blind नजर नहीं आता, spot एक जगह जो आपको नजर नहीं आती. Right. An area covered by your right hand mirror. So blind spot वो area है जो आपके right hand mirror से cover होता है. या blind spot an area not covered by your headlights या वो है जो आपकी headlight से cover नहीं है. और an area covered by your left hand mirror या वो area जो left hand mirror से covered है उसको blind spot बोलते हैं. या an area not visible to the driver या जो area driver को नजर नहीं आता उसको blind spot बोलते हैं. So if we go into the explain answer. Modern vehicles provide the driver with a good view of both the road ahead and being behind using well-positioned mirrors. So आजकल की जो modern vehicles हैं, modern गाड़ियां हैं, वो काफी उनके जो mirrors हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लगाए हुए हैं, position किए हुए हैं और आपको काफी road के पीछे से काफी चीजें नजर आती हैं. However, लेकिन the mirrors can't see every angle of the scene behind. So mirrors में से हर चीज नजर नहीं आती जो पीछे है. And to the sides of the vehicle. It's essential, बहुत जरूरी है that you know when and how to check the vehicle's blind spots. आपको पता हो कि किस वक्त vehicle के जो blind spot हैं वो कब check करनी है. So that you're aware of any hidden hazards. So आपको कोई भी खतरा अगर छुपा हुआ खतरा है तो उससे आप आगाह हो जाए. So that will be what does the term blind spot mean? An area not visible to the driver. Yeah. So that's it for now. And join me again for another lesson, which we will carry on, and hopefully that will be the last lesson in the chapter Alertness.